No capillarity. This is a phenomena of surface tension. Phenomena of surface tension. Now, what is a capillary tube? It is just like a refill, but it is having a very fine hole throughout the length. Throughout the length, there will be a very fine hole. It's clear? In refill, if you see, तो वहाँ पर जो होल है वो तो क्या है, एक वाइडर होल है. देखा होगा रिफिल जो पेन में लगती है उनमें क्या होता है, एक वाइडर होल होता है. यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब में ये होल क्या है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. इट्स क्लियर? हियर इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स इट्स डायमीटर विल बी वेरी स्मॉल, मीन्स स्मॉलर देन विच इज इन द refill, pen's refill. Now if you immerse this capillary tube, so as we know that there are two kinds of liquid, one which wet to the solid surface, मतलब जिस सॉलिड्स के कांटेक्ट में आते हैं उसको भिगो देते हैं, अदर विच डू नॉट वेट टू द सॉलिड surface. फॉर एग्जाम्पल mercury, when mercury comes in contact of a solid surface, it do not wet to the solid surface. And why? Because its surface tension is more. इसका सरफेस टेंशन क्या है, अधिक है. जितना अधिक सरफेस टेंशन उतना ही अधिक क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, उतना ही अधिक फोर्स ऑफ कोहेसन. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट द सरफेस टेंशन फोर्स इज ए फोर्स ऑफ कोहेसन. इट्स क्लियर? इट इज द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस. सो सी हियर, more the surface tension, more will be the cohesion force, and more will be the cohesion force. So what will happen? It will overcome to the adhesive force. Means, for example, suppose this is a glass plate, and if you pour the mercury over it, what will happen? Two kind of forces will act on these molecules which are in contact of the glass plate. One is the cohesive force by the other mercury molecules, and another is the adhesive force because of the molecules of glass. Adhesive force, those molecules which are in contact of the glass plate, they will experience two type of forces. One, cohesive force because of the other mercury molecules, and another is adhesive force which is exerted by the molecules of glass. And since its surface tension is more, therefore cohesive force is more. Cohesive force is more, therefore what will happen? This molecule will not cling to the glass plate. क्यों? क्योंकि cohesive force अधिक है, adhesive force कम है. तो क्या है, मॉलिक्यूल ग्लास प्लेट से चिपक नहीं पाएगा, मतलब उसको वेट नहीं कर पाएगा. इट्स क्लियर? And it will remain spherical. But if in place of this, if you pour the water drop here, if you pour the water drop, then what will happen? Here cohesive force will be less because its surface tension is very very less. We know that the surface tension of water is 0.08 Newton per meter. So surface tension is less, therefore cohesive force will be less. Adhesive force is more. So what will happen ultimately? ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच ले जाएंगे, और जब उस तरफ खींच ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये ग्लास की प्लेट से चिपक जाएगा. मीन्स इट विल वेट टू द ग्लास प्लेट. मीन्स देर आर टू काइंड्स ऑफ लिक्विड, वन विच वेट टू द solid surface, other which do not wet to the solid surface. Those which are wetting to the solid surface, for them angle of contact will be less than 90 degree, and those which do not wet, for them angle of contact is more than 90 degree. What is angle of contact? Already I have told, it is the angle between what and what? Between the tangent on the liquid surface. Surface means the free surface. Tangent on the liquid surface and tangent on the solid surface inside the liquid at the point of contact. That will be the angle of contact. Now see here this is a capillary tube and it is immersed in a container of water.
here it is immersed vertically in a container of water. So as already I have told, what will be the shape of the meniscus near the कैपिलरी ट्यूब? मतलब क्या है, जहां पर कैपिलरी ट्यूब है वहां पर मिनिस्कस का शेप क्या होगा? मिनिस्कस मीन्स इट इज द वाटर सरफेस, इट इज द फ्री सरफेस. व्हाट विल बी द मिनिस्कस? मिनिस्कस विल बिकम द कर्व्ड. मिनिस्कस क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा. इट्स क्लियर. एंड दिस कर्वेचर विल बी मोर इफ द डायमीटर इज लेस. अगर हम क्या है, कैपिलरी ट्यूब की जगह क्या है, एक कोई टेस्ट ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन हो, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन हो, टेस्ट ट्यूब की साइज की हो. इफ वी इमर्ज दैट देन वी विल फाइंड दैट इन दैट कर्वेचर विल बी लेस. बट इफ इट्स डायमीटर इज लेस देन कर्वेचर विल बी मोर. कर्वेचर क्या होगा? बहुत अधिक होगा. इट्स क्लियर. एंड वन मोर थिंग, मोर द कर्वेचर लेस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू कैन सी हियर what is the difference between curvature and radius of curvature. Suppose these are the two turns. ये दो टर्न हैं, एक 1 है दूसरा 2 है. विच इज मोर कर्व्ड? कौन सा अधिक कर्व्ड है? 1 अधिक कर्व्ड है, उसमें कर्वेचर अधिक है, ये शार्प टर्न है. इसमें क्या है? कर्वेचर इज लेस. बट इफ यू सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द part of a smaller circle. Here this is the part of a bigger circle. So here radius of curvature is more and here radius of curvature is less. It's clear. Means more the radius of curvature, less will be the curvature. Less will be the curvature. So see here. Here what will happen? Inside the capillary tube, inside the capillary tube, this meniscus will become curved. Meniscus will become curved means what will happen? Here there will be the pressure difference in the either side. दोनों साइड में क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. नाउ सी हियर, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग हियर? हु कैन टेल? Atmospheric pressure is acting. What type of pressure is acting? Atmospheric pressure. What will be the pressure here? P. What will be the pressure here? P. And there is one law of fluid pressure. At the same horizontal level, there will be the same pressure at all the points. So you can see this point, and this point all are situated on the same horizontal level. These points are situated on the same horizontal level. So what will happen? There will be same pressure at all of them. मतलब यहां भी प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? P. Now see here, what will be the pressure just below to the free surface here? Just below to the free surface. Here you can see that the surface is curved or plane. ये कर्व्ड है यहां पर कि प्लेन है? कैसा दिखाई दे रहा? इट इज प्लेन. हियर इट इज प्लेन. इट इज क्लियर. सो व्हाट विल बी द प्रेशर हियर? प्रेशर विल बी P. जस्ट बिलो टू द फ्री सरफेस प्रेशर विल आल्सो रिमेन सेम. मीन्स जो प्लेन सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्लेन सरफेस के नीचे होगा. आया समझ? मीन्स जस्ट बिलो. But here if you see, if you find out here, this is the liquid surface, you can see. Here pressure is acting P. What will be the pressure at this point? This is the H depth. It is situated at H depth. What will be the pressure here? यहाँ पर pressure कितना हो जाएगा? P plus H rho G. What is P? P is the atmospheric pressure. It is clear. What is H? It is the depth of this point from the free surface. Rho is the density of liquid. G is acceleration due to gravity. But if you take this point, so here H will become 0. H will become 0 means the pressure will remain same. Means pressure just above to the plane surface and just below to the plane surface it will remain same. मतलब जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर क्या होगा? यहाँ होगा. जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर क्या होगा?
यहां होगा. It is clear? It is clear or not? There will be the same pressure. So here also there should be pressure should be P. Here also at this point inside the capillary tube pressure should be P. Pressure कितना होना चाहिए? P होना चाहिए. But because of the surface tension, what will be the pressure here? Here pressure will be P minus 2 into T upon R. 2 into T upon R. You can see in another diagram here. This is the container and this is the capillary tube. हमने कैपिलरी ट्यूब के साइज को बढ़ा दिया एंड हियर लिक्विड इज फिल्ड हियर. एट द एजेज इट विल बिकम कर्व. एज पर क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा. कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर इतना नहीं होगा जितना हमने शो किया है. हियर शेप विल बिकम दिस. Here already I have told that outside the capillary tube there will be same pressure below to the free surface and above to the free surface, which is equal to the atmospheric pressure. But here if you see, here pressure is P, but what will be the pressure here? It will be P minus 2 into T upon R. 2 into T upon R. Now see here what will happen if we take that the pressure at this point is P minus 2 into T upon R, then law of fluid pressure will be violated. Law of fluid pressure will be violated. According to the law of fluid pressure, there will be same pressure at all the points situated on the same horizontal level. All these points are situated on the same horizontal level. But here pressure is P, here it is P, but here it is P minus 2 into T upon R. It is clear? So in order to compensate this loss of pressure, कितना प्रेशर कम हो गया है? कितना कम हुआ? 2 into T upon R के बराबर प्रेशर कम हो गया. In order to compensate this loss of pressure, what will happen? This liquid will rise inside the capillary tube. This liquid will rise inside the capillary tube. और कहाँ तक राइज करेगा? कहाँ तक राइज करेगा? इतना राइज कर जाएगा कि जिसके कारण प्रेशर कितना हो, जितना लॉस ऑफ प्रेशर हुआ है उसके बराबर हो. इट इज क्लियर? दिस लिक्विड विल राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. और ये कहाँ तक राइज करेगा कि उतना लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एग्जर्ट करे, इसके बराबर का प्रेशर एग्जर्ट करे. सो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर हियर? यू कैन सी हियर टोटल प्रेशर विल बी P minus 2 into T upon R. और ये भी कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा? 2 into T upon R के बराबर. इट्स क्लियर? सो when you will add this, what will happen? Pressure will become P. Means the liquid rises in the capillary tube. This phenomena is known as capillarity. This phenomena is known as capillarity. आए समझे? यहाँ पर लिक्विड क्या है? राइज कर रहा है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. इन द वेन्स ऑफ द प्लांट्स वाटर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्शन. वाटर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्शन फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड देन टू द लीव्स. तुमको मालूम होगा कैसे वाटर जाता है रूट से. हम लोग कहाँ पानी डालते हैं? रूट्स पर डालते हैं कि स्टेम में डालते हैं कि वहाँ लीव्स पर डालते हैं? हम लोग लीव्स पर डालते हैं. मतलब धो देते हैं कि ताकि साफ दिखाई दे. रूट सूखी ही रहती है. सो इट विल राइज फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. सो सी हियर लिक्विड इज राइजिंग. सो दिस फिनोमेना of rising of liquid in the capillary tube
is called the capillarity. It is clear? It is because of the surface tension. Why? Because this loss of pressure is occurring due to the surface tension. ये लॉस ऑफ प्रेशर किसके कारण हो रहा है? सरफेस टेंशन के कारण हो रहा. नाउ सी हियर, इफ इन प्लेस ऑफ दिस यू टेक ए लिक्विड mercury, in place of this you have taken mercury, in that case it will rise or it will fall. So you can see here this is the capillary tube. As already you know that when mercury is in a mercury container, this capillary tube is emerged, then shape becomes convex from the upper side. From the upper side this shape will become convex. ऊपर से देखने पर ये क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा. अगर तुमने देखा हो थर्मोमीटर में तो वो उसमें क्या होता? मिनिस्कस कैसा होता? कॉन्वेक्स हो जाता. ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स. इट्स क्लियर? दिस इज फिल्ड विद मर्करी. Filled with mercury. It is clear? Now see here. Here what will happen? Here pressure is P and here also P. P is what? Atmospheric pressure. But if you see just below to the free surface, here what will be? It will be P. Here what will be? It will be P. But here what will be? हमको मालूम है कॉन्केव साइड से प्रेशर क्या होता? अधिक होता. दिस इज द मिनिस्कस. दिस इज द मिनिस्कस ऑफ मर्करी. फ्रॉम अपर साइड इट इज कॉन्वेक्स, फ्रॉम दिस साइड इट इज कॉन्केव. हियर प्रेशर इज P बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग. सो हियर इट विल बी व्हाट? क्योंकि इधर से अधिक है, कितना अधिक होगा? देयर आर हाउ मेनी फ्री सर्फेसेज? वन फ्री सरफेस. सो P प्लस 2 into T upon R means what will be the pressure here? P plus 2 into T upon R. It is clear? 2 into T upon R. So what will happen? Instead of rising, now the mercury level inside the capillary tube will drop. Instead of rising, mercury level inside the capillary tube it will drop. और ये कितना ड्रॉप कर जाएगा? इतना ड्रॉप करेगा कि उतनी हाइट के बराबर का मर्करी कॉलम कितना प्रेशर एग्जर्ट करे? 2 into T upon R. कितना ड्रॉप कर जाएगा? नाउ यू कैन सी हियर. कितना ड्रॉप करेगा? इतना ड्रॉप करेगा कि उस हाइट का मर्करी कॉलम इज एग्जर्टिंग हाउ मच प्रेशर? 2 into T upon R. If we take the density of mercury as rho, then here you can see that H into rho into G equals to 2 into T upon R. It's clear? Same expression will be true here also. यहाँ पर लिक्विड कितना राइज कर रहा था? वाटर कितना राइज कर रहा था? So that the water column of that length is exerting same pressure as the loss of pressure. यहां पर लॉस ऑफ प्रेशर के बराबर होगा, वहां पर एक्सेस मीन्स हियर H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर रो इंटू G इक्वल्स टू 2 into T upon R. It is clear? Now see here, if you verify whether it is correct or not, now liquid pressure will be obeyed or not. So here what is the pressure when this will fall? When liquid will fall, this mercury will drop inside the capillary tube. What is the pressure here? What is pressure at this point? Shreya, what will be the pressure here? It will be atmospheric pressure. It will be atmospheric pressure. It is clear? Means what is the pressure here? Atmospheric pressure is acting. What will be here at this point? At this point it will be P plus 2 into T upon R. It is clear? Just below to the surface it will be 2 into T upon R. Now if you see other points which are situated at the same depth
बट आउटसाइड कैपिलरी ट्यूब। अगर हम एक और दूसरा पॉइंट देखें जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर हो पर उसी डेप्थ पर हो, जिस डेप्थ पर ये है उसी डेप्थ पर ये भी हो, सो यू विल फाइंड दैट व्हाट विल बी द प्रेशर हियर। हियर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P plus pressure due to this height of liquid column, that is P plus H rho G, but H rho G already we have taken, so it will be P plus 2 into T upon R. It is clear, 2 into T upon R means the law of pressure will be now obeyed. So see here, this action of this phenomena of rising or falling of liquid inside the capillary tube because of the surface tension is known as capillarity, it is clear. और लिक्विड कॉलम कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा, इट विल डिपेंड ऑन दिस लॉस ऑफ प्रेशर। हाउ मच इज द लॉस ऑफ प्रेशर, उतना इतना राइज करेगा कि उसके बराबर जितना प्रेशर है दैट विच इक्वल टू द लॉस ऑफ प्रेशर और एक्सेस ऑफ प्रेशर। नाउ सी हियर, वी विल डिड्यूस वन मोर रिलेशन हियर। Now here H rho G equals to 2 into T upon R. What is R? R is the radius of curvature of curved surface of liquid meniscus. It is the R is the radius of curvature of curved surface of liquid meniscus. Now see here, here this is the curved surface is this is the curved surface. हम क्या है उस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे जिसका ये पार्ट है। यहाँ स्फीयर तो नहीं बना पाएंगे पर उसके करस्पॉन्डिंग का सर्किल बना देंगे ना, इट्स क्लियर। सो यू कंप्लीट दैट सर्किल। कुछ ऐसे होगा ये। Now see here, what will be R here? R will be this. इसका सेंटर क्या है? ये है स्फीयर का। This will be the capital R. It's clear? This is the capital R. It's clear? Now if you see the angle of contact here, what will be the angle of contact? So angle of contact is what? It is the angle on the, it is the tangent on the liquid surface, angle between tangent on the liquid surface and tangent on the solid surface. Solid surface is capillary tube, on the surface of capillary tube inside the liquid. This will be the angle of contact, theta. This will be angle of contact. Now what will be the measure of this angle? So it will be 90 degree. Why? Because this is what? Tangent. This is what? Radius. Angle between tangent and radius is 90 degree. So this angle will be 90 degree. So what will be this angle? Who can tell? ये एंगल कितना होगा? Very simple. Sum of all the angles on a straight line is 180. So 180 में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस, that is equal to 90 minus theta. It will be 90 minus theta. It's clear?
Now this thing is what? Who can tell this? ये क्या है? This is what? This is the radius of capillary tube. This is what? Radius of capillary tube. It's clear? This is the cross section of capillary tube. This is the radius. It is clear? So this you will name by the small r. Now all of you see here. In this right angle triangle, all of you see here. This right angle triangle. This angle is 90 minus theta. So what will be this? इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज 90 माइनस थीटा. सो व्हाट विल बी दिस एंगल? ये तो कोई भी बता सकता है. राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का सम क्या होता है? 90. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? हाँ, यस, वेरी गुड. थीटा नहीं होगा, थीटा होगा. इट विल बी थीटा. इट इज क्लियर? It will be theta. Now see here. Here we will deduce a relation between small r. What is small r? It is the radius of capillary tube. Radius of capillary tube. What is capital R? Radius of curvature of liquid meniscus. So what will be the relation between small r and capital R in terms of theta? Yes, Pratishtha. Relation between small r and capital R. किसी ने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये पढ़ा है? Yes, Vivek Chaturvedi. What will be the relation? Sir, theta is equals to capital R upon small r. Very good. Theta equals to capital R upon cot theta. Here it will be cos theta. Why it will be cos theta? With respect to theta, this is what? Perpendicular. This is base and this is in front of 90. So this will be hypotenuse, and base upon hypotenuse is cos theta. So cos theta equals to what? Small r upon capital R. It is clear? Small r upon capital R. It is clear? So what will be cos theta upon small r? It will be equal to 1 upon capital R. It will be equal to 1 upon capital R. Now you substitute this here. This value you substitute here. So what will you get? H rho g equals to 2 into t multiplied by 1 upon r. 1 upon r के प्लेस पर हमने क्या रख दिया? ये रख दिया. So it will be 2 into t cos theta divided by small r. 2 into t cos theta divided by small r. So see here, you further simplify. On further simplifying, you will get, you can see here, r you multiply with h rho g. So r h rho g equals to 2 into t cos theta. What will be t here? T equals to r h rho g upon 2 cos theta. R h rho g upon 2 cos theta. It's clear? This. Now see here, all of you remember one thing, that if theta is acute, then that liquid will rise in the capillary tube. If theta is obtuse, obtuse means more than 90, less than 180. What will be the value of cos theta, positive or negative? More than 90, less than 180, it means in which quadrant? Second quadrant. In second quadrant, cos theta is
negative. So it will be negative. It is clear? And negative means now liquid will not rise, it will fall down inside the capillary tube like the mercury. So this is the formula of surface tension. T equals to RH rho g upon 2 cos theta. What is small r? Radius of capillary tube. What is h? Height up to which the liquid rises or liquid depresses inside the capillary tube. जितनी हाइट तक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है या क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. जी यू नो. व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट. नाउ द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट. It can be asked in the examination. T equals to RH rho g upon 2 cos theta. Now see here, there is one more thing. Suppose you have immersed a capillary tube in a container containing water. In a container containing water. Means it will be like this. And here because of inside the capillary tube, because of the surface tension, because of the capillary action, it will rise up to h height. It's clear? Now if you break the capillary tube from here, अगर हम कैपिलरी ट्यूब को यहां से ब्रेक कर दे, what will happen? Liquid will come out from the capillary tube or not? अली, अगर कैपिलरी ट्यूब को यहां पर वाटर कहां तक राइज किया है, यहां तक राइज किया, अगर कैपिलरी ट्यूब को हम ब्रेक कर दें यहां से और तब इमर्ज करें, जब इसमें राइज कर चुका है वो तब ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली बाहर आ ही जाएगा. आए समझे? हमने एक बार देख लिया कि यहाँ तक ये राइज करता है, फिर अब हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, और दूसरी बार जब डुबोया तो क्या है, यहीं तक कैपिलरी ट्यूब है, जबकि पहले वाटर क्या है, इसके ऊपर तक राइज किया था. क्या होगा? Liquid will come out, water will flow out from the capillary tube or it will not. So water will not flow out of the capillary tube. And why it will not flow out of the capillary tube? So you see at this relation, H rho g equals to 2 into T upon capital R. If you see H into capital R from this relation, you find out the value of H into capital R. It will be equal to what? 2 into T divided by rho into G. What is T? Surface tension rho, density G, acceleration due to gravity. All these things do not depend upon the length of capillary tube. कोई मतलब ही नहीं है. कोई मतलब है इसका सरफेस टेंशन, लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब कुछ अलग चीज है, कैपिलरी ट्यूब अलग चीज है, उसका लिक्विड से कोई मतलब ही नहीं है. रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स इट विल बी कांस्टेंट. इट विल बी ए कांस्टेंट हियर. इट्स क्लियर? एंड व्हेन इट इज कांस्टेंट मीन्स एच इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. व्हाट इज एच? It is the height up to which the water is rising in the capillary tube. What is R? It is the radius of curvature of this surface. It is clear? So if the capillary tube is of insufficient length, here I am showing here in this diagram, if the capillary tube is of insufficient length, then liquid will not flow out of the capillary tube. It will not flow out of the capillary tube. Instead of that, what will happen?
on reaching at the top, on reaching at the top surface, it changes its radius of curvature. ये liquid meniscus क्या है? It is clear? You can see here, here we have broken from here. Here capillary tube is of smaller length. डायमीटर दोनों जगह क्या है? सेम है, वो चीज सेम है. जो इसका डायमीटर है वही इसका भी डायमीटर है. सो ऑन रीचिंग एट द टॉप व्हाट विल हैपन? दिस लिक्विड सरफेस विल चेंज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा. आर की वैल्यू को इंक्रीज कर लेगा. व्हेन आर विल बी इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू द एच? इट विल बी डिक्रीज्ड. व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज कांस्टेंट. Product of both is constant, means H is inversely proportional to R, means now it will become less curved. It will become less curved. यहां पर कर्वेचर अधिक था, यहां पर कर्वेचर क्या हो गया? कम हो गया. कर्वेचर कम होने का मतलब क्या बढ़ गया? कैपिटल आर हैज इंक्रीज. कैपिटल आर हैज increased. It is clear? And capital R has increased, therefore the height up to which the liquid should rise in the capillary tube, that has decreased. Capital R has increased का मीनिंग क्या है? कि जिस हाइट तक लिक्विड को राइज करना चाहिए वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. This is clear? So if there is a capillary tube of insufficient length, then on emerging it inside the water, what will happen? Water will not flow out from the top of the capillary tube. Instead of that, what will happen? On reaching at the top surface, liquid meniscus will change its radius of curvature. Liquid meniscus will change its curvature. It's clear? It reduces its curvature. ये अपने curvature को reduce करता है. Means capital R को क्या करता है? Increase करता है. Because of that, small h means the height up to which the liquid is rising, that will fall. It is clear? वो कम हो जाएगी. Now see here, if you tilt the capillary tube, अगर क्या है, instead of holding it vertical, you have tilted the capillary tube, then what will happen? Then what will happen? Liquid will rise up to the same vertical height. Liquid will rise up to the same vertical height, means you can see here, मतलब हमने इसको वर्टिकली नहीं इमर्ज किया है, हमने इसको स्लैंटिंग वे में इमर्ज किया है. So what will happen? Here liquid will rise up to the same vertical height. Vertical height will remain same. इट्स क्लियर? मतलब वर्टिकल इमर्ज करने पर जितना ये वर्टिकली राइज कर रहा था उतना ही स्लैंटिंगली इमर्ज करने पर राइज करेगा. वर्टिकल हाइट विल रिमेन सेम, बट नाउ मोर लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय द लिक्विड. इट्स क्लियर? मोर लेंथ ऑफ लिक्विड विल बी, मोर लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय लिक्विड. So everything has finished in this chapter, and numericals I will solve. So I will send the video of numericals.